Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Educational Point. I am Jyoti ma'am and today I am going to discuss C++ program for selection structure. But before starting the section, I would like to say please subscribe my channel. Now let's go. In my very previous video, I have already discussed about the selection structure and the types of selection structure. तो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. नाउ जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर. फर्स्ट, वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट. सेकंड, टू वे सिलेक्शन स्टेटमेंट. एंड थर्ड, मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट. So let's see the C++ program to illustrate the working of these types of selection structure. First of all, we will see the one-way selection statement with the help of if statement. This is the C++ program to illustrate if statement, which is the one-way selection statement. In this program, we declare a variable num, which store an integer value entered by the user. Next, here we use if statement, and this statement is executed only when the entered value will be negative, or otherwise it will skipped. And after that, the last cout statement will execute. Now let's execute this program. First of all, compile it, then run this program. Here we have to integer an integer value, for example 56. So it will print the statement the entered number 56. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो entered किया गया वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए if स्टेटमेंट को बाईपास कर दिया गया और लास्ट cout स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया गया है. नेक्स्ट we will see the two-way selection statement with the help of if-else statement. This is the C++ program to illustrate if-else statement, which is the two-way selection statement. In this program, we declare a variable age, which store an integer value entered by the user. This age will represent the user's age. After this, we have if-else statement. Here, we write the expression like age is greater than equal to 18. अगर ये expression true होगा तो इससे related ये cout statement execute होगा. Otherwise, next cout statement execute किया जाएगा. Let's see what will be the outcome of this program. So first compile it. Now let's run this program. Here we input any value. For example 34. तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा गिवन एक्सप्रेशन ट्रू था, इसलिए स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ है. आफ्टर दैट we will see the multi-way selection statement with the help of if-else-if statement. This is the C++ program to illustrate if-else-if statement, which is the multi-way selection statement. In this program, we declare a variable num, which stores the integer value. Here we have many alternatives, and उन सारे अल्टरनेटिव्स में से सिर्फ वही अल्टरनेटिव एग्जीक्यूट होगा जो कि हमारे इनपुट से मैच करेगा. सो लेट्स सी.
what will be the output? First of all, let's compile this program. After that, run this program. So here we have to enter any number, for example 234, and according to this input we get the output, you entered a positive number. चलिए इस प्रोग्राम को एक बार और रन करवाते हैं विद डिफरेंट वैल्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग मैच करता हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। एंड लास्टली वी विल सी द मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट अगेन with the help of switch statement. This is the C++ program to illustrate switch statement, which is the multi-way selection statement. In this program, we declare two variables of name num1 and num2, and one more character type variable OP, which stands for operator. In this program, we gonna do some operations on the given operators. तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेटर्स की लिस्ट दिए हुए हैं। इस लिस्ट में से जो भी ऑपरेटर यूज़र के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। Here we use the switch statement like this. We have different cases, for example addition, subtraction, multiplication, division, and one more default case. So according to their expression, some statements will be executed. If all the cases will not match with any expression, then the default statement will be executed. Let's see what will be the outcome of this statement. First of all, let's compile this program. After compilation, let's run this program. Here we have to enter two numbers, for example 45 and 89. Now we have to enter any operator from the list. So for example we give multiplication operator. So the answer will be like this. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो ऑपरेटर एंटर किया है उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गया है। चलिए देखते हैं क्या होगा यदि हम इन ऑपरेटर्स के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर एंटर करते हैं तब। Again we have to enter two numbers like this, and now we enter an operator which is not in this list. For example, percentile operator. So it will execute the default statement. Thanks for watching everyone. Please subscribe my channel. Also like and share this video and press the bell icon for further updates.